cry, laugh, eat, play, sing, action words. They all are action words. The words that show action, they are called action words. And action words are called verbs also. Our today's topic is verbs and helping verbs. What are action words? Words that show actions are called verbs. Like come here. So here in this sentence, the word come is presenting an action, so it is a verb. I am reading a book. Here in this sentence, the word reading is presenting an action, so it is also a verb. So the words that show actions are called verbs. Now, helping verbs or main verbs. After watching this video, you will not have any confusion between both helping verb or main verb. Students, all the action words that show action, they are called main verbs. But the words that help main verbs are called helping verbs. जो helping verbs होते हैं, what do they do? Actually, they help main verb. जो हमारा action होता है, वो उसको help करते हैं. How? It is raining outside. So here in this sentence, raining is a word that is presenting action. So it is main verb. And the word is it. It is helping the word raining to make complete sense. यहाँ पे जो word is है, that is helping verb. Why it is called helping verb? Because it is helping main verb. ये main verb को help कर रहा है to make the complete sense. That's why we call it helping verb. She was cooking the food. So again, the word was is helping the main verb, that is cooking. So it is called what? It is called helping verb. So that is the difference between both. The words that help main verb, they are called helping verbs, and the words that presents actions, they are called main verb or action words. Helping verbs that are used in present time, like is. It is used to talk about singular subject. My sister is not well. So here I want to tell the state, the condition of my sister. जब भी हमारे पास एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसकी हम प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन बताना चाहते हैं, so we will use is as a helping verb. Next one, any activity that is going on at the present time. Right now कोई एक्टिविटी चल रही है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं is with verb ing. ठीक है, लाइक शी इज़ टेकिंग रेस्ट. तो अभी जो काम चल रहा है, शी इज़ टेकिंग रेस्ट, वो अभी इस टाइम पे रेस्ट ले रही है. ठीक है, दिस इज यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट ओनली in present time. I hope this is clear to you. Next one is are. It is used to talk about plural subject. So are का यूज जो होता है
हम टू कंडीशंस में करते हैं, एक तो स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए और दूसरा एज अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग बताने के लिए कि किसी की प्रेजेंट सिचुएशन कैसी है, वी यूज द वर्ड आर, लाइक my sisters are not well. So here in this sentence, I'm talking about my sister. So I need to tell the condition and the subject is plural. So whenever we have a plural subject and we have to tell present condition of something or someone, so we use are as a helping verb. They are taking rest. So right now this activity is taking place. They are taking rest. So I used here are because my subject is plural. So whenever we have to tell about any activity and we have plural subject, so we use are as a helping verb. There is a difference between two sentences. In first one, it is telling the state or condition, while in second one, it is working as a helping verb because it is helping main verb. In first one, it is used without main verb, while in second one, it is used with main verb. So whenever the words is, am, are, was, were, has, have, had are used with verb, they are called helping verb because at that time they are helping a verb. But when these all words are used without main verb, they are called state of being because they are presenting the state or situation. Next one. Next one is am. It is used with I. So whenever I am talking about myself, मैं अपनी कोई भी कंडीशन बताना चाहती हूँ तो अपनी कंडीशन बताने के लिए एट द प्रेजेंट टाइम जो मेरी कंडीशन है, जो स्टेट है, उसको बताने के लिए मैं आई के साथ एम यूज़ करूँगी. लाइक आई एम सैड, आई एम बिजी, I am happy. I am free. ठीक है? So example, I am not well. So here I want to tell my present time condition. Present time right now. मैं कैसा feel कर रही हूँ? I am not well. I am taking rest. So here in these two sentences, I'm talking about present condition and activity. In first one, present condition and in second one, present activity. ठीक है, जब भी मुझे अपना प्रेजेंट का स्टेट बताना है, आई एम सैड, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, आई एम टायर्ड, तो मैं आई के साथ एम यूज़ करती हूँ. ठीक है, विदाउट मेन वर्ब. और जब मैं किसी एक्टिविटी के बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम पे ये वाला वर्क कर रही हूँ, तो मैं आई के साथ एम एंड देन एक्शन वर्ब के साथ में आई एन जी यूज़ करती हूँ. ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम ईटिंग माई ब्रेकफास्ट, आई एम प्लेइंग लूडो, आई एम वॉकिंग. I hope this is clear to you. Next one, has. So what is the use of has? Has is also used with present time to talk about the action that has been done in present time. अभी अभी कोई वर्क हुआ है in present time. So to talk about that action we use has. How? The glass has broken. एक ग्लास मुझसे टूट गया है. So I would like to say the glass has broken. To talk about that someone has with singular subject. किसी के पास कोई चीज़ अभी है प्रेजेंट टाइम में, वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो उसके लिए भी मैं यूज़ करूँगी हैज़ को एज अ हेल्पिंग वर्ब. लाइक ही हैज़ अ पैट. उसके पास क्या है? उसके पास एक पैट है.
शी हैज़ अ पेन, उसके पास क्या है? उसके पास एक पेन है। नेहा हैज़ अ बुक, नेहा के पास क्या है? नेहा के पास एक बुक है। तो किसी के पास अभी प्रेजेंट टाइम में कुछ है, उसे बताने के लिए हम यूज़ करते हैं हैज़ को। एंड द एक्टिविटी दैट हैज़ टेकन प्लेस राइट नाउ, कोई भी चीज़ अभी अभी हुई है उसको बताने के लिए भी हम हैज़ का यूज़ करते हैं। बट अ सब्जेक्ट शुड बी सिंगुलर, and if a subject is not singular, it is plural, then we'll use have to talk about that someone have with plural subject. कोई भी plural subject है, उनके पास कुछ है, तो उसको बताने के लिए हम have use करते हैं. Like they have a pet. तो मैं यहाँ पर more than one subject की बात कर रही हूँ कि उनके पास एक pet है. To talk about the actions that have completed, कोई भी more than one activity complete हो चुकी है, more than one subject के लिए जो activity already taken place, उसके लिए हम have use करते हैं. How? The glasses have broken. एक ग्लास नहीं टूटा है, 2 और 3 या फिर ज़्यादा ग्लासेस टूटे हैं. So for that I will use the glasses have broken. Okay, next one. Now, past time helping verb. Helping verbs that are used in past time. One of them is was. It is used to talk about singular subject. So whenever we are having a singular subject and we want to tell the past condition or state of that subject, we use was. Like, my sister was not well. So here I want to tell the condition of my sister in past time. So though my sister, this subject is singular, so I will use was. It is also used to tell past activity. The activity that was taking place in past. कोई भी activity जो past में चल रही थी, it was continue. So to show such type of activity, we'll use was. Like she was taking rest. Were. It is used to talk about plural subject. Plural subject in past. So whenever we want to tell someone about someone in past, past में हम किसी की condition और state बताना चाहते हैं and our subject is plural, more than one. More than one subject के लिए हम क्या use करते हैं? We use were as a helping verb. Like, my sisters were not well. So here I am telling the condition of my sisters. कि जो my sisters थी वो well नहीं थी. कोई भी condition बताने के लिए जो past में थी plural subject की, more than one की, we will use were. ठीक है, मैं अपने sisters की condition बता रही हूँ कि जो मेरी sister थी वो पहले क्या नहीं थी, पहले वो वेल नहीं थी. माई सिस्टर्स वर नॉट वेल, है ना. माई फ्रेंड्स वर नॉट बिजी. ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट होता है और हम पास्ट की बात करते हैं तो हम वर को यूज़ करते हैं. ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, they were taking rest. So here the word is telling past time activity. So to tell what was going on in past with plural subject, we use were. कोई भी एक्टिविटी जो पास्ट में चल रही थी, ठीक है, तो उसको बताने के लिए विद प्लूरल सब्जेक्ट के साथ उसको बताने के लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं. ठीक है, लाइक दे वर टेकिंग रेस्ट. तो ये टेकिंग रेस्ट की जो एक्टिविटी है ये पास्ट में चल रही थी कि दे वर, दे, इट इज़ अ प्लूरल सब्जेक्ट, सो आई विल यूज़ वर ओवर हेयर. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन, had.
Had is also used to show the past activities, like to talk about something that someone had earlier. मेरे पास कोई भी चीज़ पास्ट में थी, अब नहीं है. ठीक है, मेरे पास कोई चीज़ पास्ट में थी. लाइक he had a pet. ठीक है, तो यहाँ पर he had a pet, उसके पास एक पेट था. ठीक है, I had a car, मेरे पास एक कार थी. She had a coin, उसके पास एक कॉइन था. They had a बाइक, उनके पास एक बाइक थी. तो कोई भी चीज़ किसी के पास पास्ट में थी तो उसको शो करने के लिए वी यूज had. नेक्स्ट वन, टू टॉक अबाउट दैट had already done. कोई भी वर्क जो ऑलरेडी हो चुका है उसके लिए भी हम had का यूज़ करते हैं. ऑलरेडी डन इन पास्ट, लाइक द ग्लास had broken. ठीक है, मुझसे मेरी मम्मा ने पूछा कि जो हमारा यहाँ पर एक ग्लास रखा रहता था वो कहाँ पर है. तो मेरे दिमाग पे एकदम से स्टक हुआ कि वो तो मुझसे टूट गया था, है ना. तो आई वुड लाइक टू से, मुझे क्या बोलना है, मैं ये बोलूँगी द ग्लास हैड ब्रोकन, ये तो टूट गया था, है ना. द ग्लास हैड ब्रोकन, जो ग्लास है वो टूट गया था. ठीक है, सो हैड इज यूज टू टॉक अबाउट दैट हैड ऑलरेडी डन, द एक्टिविटी दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस, जो कोई वर्क पहले से ही हो चुका है उसको शो करने के लिए वी यूज हैड एज अ हेल्पिंग वर्ब. I hope all the helping verb that I explained in this video are clear to you. Thanks for watching this video.